Hello and welcome to Physics Demystified. This is product 2, that is Chemistry Demystified, and we are starting with chapter 1 of class 12th, solid state. Okay, so in this part we are going to study existence of solid, how solids exist, types of solid and types of crystalline solids. Okay, so before that we will see how solids, liquids and gases exist at different temperatures and pressures. Okay, so here we go. For that we have this kind of arrangement, as you can see over here. So these are neon atoms. Okay, neon atoms, and you can see a thermometer over here. All right, so you can see a temperature scale reading. It is in Kelvin. I'll convert it into degrees Celsius. You can see a barometer that is measuring the pressure over here. Now we will start cooling this. Okay, so for cooling I apply this kind of setting, that is ice. Okay, the temperature, as you can see, is lowering. Okay, and now they are getting solidified. As you can see, the motion has stopped, and also now that it is 273 minus 273 degrees Celsius, absolute 0 degrees Celsius. Okay, absolute 0 Kelvin or absolute 0 temperature, you can see no molecular motion, right? You cannot see any vibratory motion also. Now slowly I increase the temperature. Also please note that the pressure is also 0 atmospheres. Okay, so now I slowly increase the temperature. Okay, so as you can see, there are two types of motion a particle undergoes. Okay, if you notice, first is it is vibrating about itself, and second one is now it is going in motion, it is roaming here and there. Okay, so as the temperature is increasing, you can notice that the pressure is also increasing in the barometer. Please check. Okay, also the mercury will rise, right? So now the temperature is minus 125 degrees Celsius. Now as you can see, the motion is becoming faster and faster. The pressure is also increasing. What does this mean? This means that if I increase the temperature, the molecular motion also increases, and thus they apply pressure on the walls of the container. They means what? The molecules, whatsoever molecule. Suppose here we have considered neon atom, but if I consider, for example, water molecule. Okay, this is water molecule, this is liquid state. Basically water is in liquid state, as you all know. Suppose now I increase the temperature. I'm increasing the temperature. As you can see, they are vibrating about itself. They are vibrating about itself themselves. The each and every molecule will vibrate. You can see circular motion or spinning. Okay, also you can see the temperature and pressure increasing. As the temperature is increasing, the spinning is also increasing, that is vibratory motion. Also the here and there motion, means it is called as Brownian motion, that is also increasing. The speed is also increasing. Okay, now I decrease the temperature, and now we are coming to the concept of solid state. Okay, so now currently this is water molecule, the temperature is around 600. That means it is in steam form, not even water vapor, steam form. Okay, now it is coming towards 100 degrees Celsius. You can see the pressure also lowering. Okay, it is coming to be 100 degrees, and now you can see that the motion is somewhat mild. The speed has somewhat decreased. Also the spinning effect is also decreased. It is not vibrating around itself, about itself. Okay, here we are at 100 degrees Celsius now, and now it is going to form ice, pure ice. Here we have crossed 0, and now as you can see we have reaching minus 273. Now the temperature is decreasing slowly, as you can note. It is going very slow. Now the molecular motion, if I slightly check at around
maybe 0 degree Celsius. If I increase, see, there is a molecular motion, it is vibrating. And now if I condense it, if I decrease the temperature, you can see that the molecular motion is reducing. Now as we reach minus 273 degrees Celsius, we are about to reach minus 273 degrees Celsius, that is absolute temperature, absolute zero. Okay, here all the molecular motion has stopped. सारी molecular motion रुक चुकी है, कुछ भी घूम नहीं रहा है, सब कुछ एनर्जी लॉस हो चुका है. ओके, और यू कैन सी अ पर्टिकुलर पैटर्न. ये रैंडमली कहीं पर भी एडजस्ट नहीं हुए हैं. अगर आप देखो, ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही एडजस्ट हुए हैं. ओके, सो दिस इज सॉलिड स्टेट. दिस इज सॉलिड स्टेट. अब ये ऐसे क्यों हुए हैं? वाई दे आर इन सच अ पैटर्न? How they come in such a pattern? This is what we are going to study in this particular chapter. Okay, so we now move on to the chapter that is solid state. So existence of solid, we are going to check this first. Let us zoom in. First of all, here we will study the properties of solid, liquids and gases. As you can see over here, that the mass of solid is always definite. Okay, also the liquid has a definite mass means what? Simply amount of matter. Now all of these three phases do contain some kind of matter in them. Okay, they all are made up of matter, so they all will have definite mass. Okay, I hope this is clear. Now volume. What is volume? Volume means the capacity of a particular substance to occupy matter in it. So solids have definite volume, they will occupy a definite amount of matter in a definite amount of space, right? Liquids will also have definite volume. They take the shape of the container, and whatsoever is the volume of the container, they will occupy that much liquid. That container will occupy that much liquid. उतना ही liquid उसमें बैठेगा. ठीक है. Gas. Now gas, आपने देखा कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है. इट इज़ इनडेफिनाइट. हम उसको मेजर नहीं कर सकते ठीक से, उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी. ओके, देन स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स. सॉलिड स्टेट में आपने उस डायग्राम में, उस एक्सपेरिमेंट में देखा कि सॉलिड स्टेट बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज था, बहुत क्लोज्ड पैकिंग था पार्टिकल्स के बीच में. पार्टिकल्स मीन्स व्हाट? दे कैन बी एटम्स. ओके, हमने नियॉन देखा था, वो एटम था. दे कैन बी मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स किसका था? वाटर मॉलिक्यूल, H2O. ठीक है, तो वो जब आइस बन रहा है वाटर, वो बहुत कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, राइट? सो मोस्ट क्लोजली पैक्ड. नेक्स्ट इज लिक्विड. आपने देखा लिक्विड का थोड़ा सा सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा स्पेसिंग था बीच में. ओके, सो दैट मीन्स द पैकिंग इज कंपैरेटिवली लेस. ओके, एंड गैसेस, वो तो इधर उधर भाग रहे थे पार्टिकल्स, राइट? सो द पार्टिकल स्पेस वाज ह्यूज, बहुत ज़्यादा था उन दो पार्टिकल्स के बीच में. ओके, नाउ इंटर पार्टिकल फोर्स. ओके, सपोज अब पार्टिकल बहुत नज़दीक है. दीज आर टू एटम्स ऑफ नियॉन. अगर ये बहुत नज़दीक है, सपोज यू हैव टू फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, तो इसका बीच में का जो फोर्स है, बॉन्डिंग है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा. ओके, सिंस इन केस ऑफ सॉलिड्स, सिंस द पार्टिकल्स वर वेरी क्लोज, द इंटर पार्टिकल फोर्स विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट. ओके, थोड़े से हाई बाय वाले फ्रेंड्स हैं, थोड़ा दूर है एक दूसरे से, सो द स्ट्रेंथ विल थोड़ा सा डिक्रीज, वीकर देन द सॉलिड. द इंटरमोलिकुलर फोर्स इन केस ऑफ लिक्विड वॉज और इज वीकर देन द सॉलिड्स. एंड लास्ट, नेग्लिजिबल. वो लेना देना ही नहीं है एक दूसरे से. दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, सो देर विल बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, इट इज नेग्लिजिबल. नेक्स्ट, रिजिडिटी. सो व्हेन यू saw the structure of that ice that we saw, okay, उसको बहुत ज़्यादा rigid बोलते हैं. Why? Because it is not easily going to distort. Distort means change its shape. Okay, the shape is definite and therefore it is highly rigid. ठीक है.
less rigid, liquid was less rigid. If you apply some kind of force, it will start flowing. Tensile force, is it applicable? Yes, no, please tell me in the comment section. Okay, tensile force and tangential force. If you apply tangential force to a liquid, it starts flowing, means it is not very rigid, less rigid. Okay, and अगर आप उसको कंटेनर में डालोगे, if it is in the container, it will acquire the shape of the container. And finally gas, it is not going to be rigid at all, वो rigid हो ही नहीं सकता. ठीक है, why? Because interparticular force is too much and therefore you cannot apply force. कहाँ पे apply करोगे? ये तो वहाँ घूम रहे हैं molecules, right? And finally we have the shape of gas, that is whatsoever container you take and fill gas in it, वही शेप उस गैस का हो जाएगा. ठीक है. कंप्रेसिबिलिटी, लास्ट कॉन्सेप्ट. कंप्रेसिबिलिटी मीन्स व्हाट? कितना कंप्रेस कर सकते हो उसको. ठीक है, कितना कंप्रेस कर सकते हो. फाइन. सो कंप्रेशन मीन्स व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंप्रेशन मीन्स व्हाट? प्रेशर increases and volume decreases. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में एक बलून है, आप उसको कंप्रेस करिए, मीन्स व्हाट? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बलून. ओके, हर जगह से प्रेशर अप्लाई करिएगा, फोर्स अप्लाई करिए, देन इट विल एक्सपीरियंस सम प्रेशर. ओके, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा. सो दिस विल बी योर न्यू वॉल्यूम फॉर एग्जाम्पल. ओके, सो वॉल्यूम जब डिक्रीज होता है, दैट इज आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, दैट इज कॉल्ड एज कंप्रेशन. ओके, एंड उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी. तो सॉलिड्स को आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, दे विल बी इनकम्प्रेसिबल, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. लिक्विड्स, हैव यू एवर ट्राई टू कंप्रेस वाटर? वाटर को फोर्स अप्लाई करोगे तो क्या वो कंप्रेस होगा क्या? नो, it will start flowing when you apply force to it. Okay, so it is also incompressible. But gases are highly compressible. They transform into liquids. Gases, अगर आप gases के ऊपर pressure बढ़ाओगे तो वो क्या करेंगे? They will convert into liquid. Okay, so when we increase the pressure, the volume decreases of gases and therefore they are compressible. Example, liquid oxygen. Okay, nowadays there is a huge need of oxygen, so oxygen की gas नहीं लेके आते हैं यहाँ वहाँ से. In the hospital, a container contains liquid oxygen and then that is converted into gaseous oxygen after releasing it. Hence we can compress liquid, hence we can compress the gases into liquids. I hope all these properties are clear. Now let us move on to the next part. So why do solids exist? Fine. So a very important concept here. You can see a structure. Okay, so these green color circles or spheres are representing one particle. This is a molecule, basically molecular solid. Okay, and this brown color is also representing something. For example, if this green color is representing an atom of maybe one element and this is another atom of another element, suppose I name it as 1 and name it as 2. Why they are sitting together? Because there is some force of attraction. Okay, and as you can see they are vibrating. Why they are vibrating? Because of internal energy. Okay, now we will check how this happens. Under a given set of conditions of temperature and pressure, we already saw this, the most stable state is what? Is the solid state. Okay, why so? Because you can see there is an equilibrium. Equilibrium means what? Two forces are equal. Now which are the two forces? Okay, so one is the intermolecular force, that is the cohesive force. Okay, cohesion means what? Attraction. They are going to attract each other. So intermolecular force, as you saw in the previous classes, or maybe we will be seeing in the
future, cohesive force is the attractive force. It is going to keep the molecules together. Okay, molecules or atoms or ions or whatsoever particles we are speaking about depends upon the given type of solid. We are later on going to see the types of solid. So this is one force. Next force is thermal energy. As I told you, internal energy. Okay, so this thermal energy keeps them apart. It wants them, this thermal energy wants them to separate. Now why they want to separate? Because, for example, you suppose get some kind of energy. Will you be stable? No. When energy increases, stability decreases. Okay, so when the molecules gain energy, the stability will decrease and they will try to liberate, they will try to overcome this intermolecular force and try to change the phase into liquid and then further into gases. So when we have an equilibrium between these two, then solid exists. Okay, so at sufficiently low temperatures, the thermal energy is very low. We just saw when we decrease the temperature, the energy of vibration that we saw, the vibratory motion of the water molecules decreased. Okay, hence the thermal energy was low at low temperature. And intermolecular forces, what will happen to them? They will, since the molecules are coming closer and closer, the intermolecular force increases. The intermolecular force increases. So what will happen? So the particles, they cling on one another and occupy fixed position. They will occupy fixed position by clinging. Clinging means what? Getting attached. Okay. One particle is held at fixed position and surrounded by other particles. So here you can see this is one particle and these are the surrounding particles of this circled particle. Okay, so this is what is happening when we decrease the temperature or at sufficiently low thermal energy. There is only one form of motion, as you can see, that is the vibratory motion. Okay, the solid molecules or solid particles are vibrating. Okay, why they are vibrating? Because they have some kind of internal energy. I accept that it is not huge, but there is some kind of energy because of which they are going to vibrate. Okay, and therefore they will not leave the particular area or particular space that they have occupied. That is why they will remain in equilibrium. Okay, but always they are going to vibrate, that is oscillate. We have oscillations in physics. Okay, next is properties of solids. So these are properties of all the solids that we are going to learn. So first property is definite shape and volume. So unlike gases, solids have definite shape and rigidity. I have already explained why they are rigid. So they have definite shape. Okay, and you saw that they form an order. Okay, depending upon the energies, they form an order. For example, this is one of the solid. Okay, and for example, I have another solid, another particle in them. Suppose I place it over here. This is a particular order that they are going to form. Okay, why they are going to form? Because of energies. How they are going to form, that we will learn later on. Okay, for now just remember they are going to form some order. This is due to why they are going to form an order and why they are having definite shape, why they have rigidity. Because constituent particles do not possess enough energy. बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं है उनमें कि वो तुरंत वो बॉन्ड तोड़ के निकल जाए, बट थोड़ी सी एनर्जी है, इसलिए वो वाइब्रेट भी करेंगे और डेफिनाइट शेप भी फॉर्म करेंगे. ओके, वाइब्रेटरी मोशन विल स्टॉप एट व्हाट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, दैट इज -273 degree Celsius or 0 kelvins. Okay, so solids are characterized by definite volume. As you know, solids have definite shape, means they will occupy only specific area or specific region of space, that is they have definite volume.
okay, and it does not depend upon the size and shape of the container in which it is placed. Okay, this is due to what? This is due to the close packing of the molecules. So since they are close, the molecules are very close, so therefore what will happen? The force, that is intermolecular force, okay, intermolecular force, if it is a molecule, force between two molecules. interparticle force to be generalized, okay, generalized क्यों? क्योंकि पार्टिकल आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो अगर ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है तो जाहिर सी बात है उन दोनों में क्या होगा? बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इसलिए वो यहाँ मत जाएंगे नहीं, ठीक है। नाउ intermolecular distances are short, I have already explained this. Next is high density and low compressibility. This is very important. Solids have very high density. Density means what? We are speaking about mass density, because in optics we have another kind of density, that is optical density, but here we are speaking about mass density. So what is mass density? Mass density is equals to mass upon volume. It is shown by rho. Rho is the density, m is the mass and v is the volume. So सॉलिड्स का बहुत डेंसिटी ज़्यादा होता है और इसके वजह से उनमें स्पेसिंग बहुत कम होती है, तो उनको हम कॉम्प्रेस कर ही नहीं सकते, ओके। सो बिकॉज ऑफ क्लोज पैकिंग द solids will be less compressible. Compressibility is very less. Okay, the particles in the solid are very closely packed. Okay, अब भले ही इधर I'll draw it over here, भले ही there is a very close positioning of the particles, but you can see one important thing in this, that is this region, this space is called as void space. This space is called as void space. This we are going to learn in great detail later on. This space is called as void space. Okay, so now extremely small diffusion. What is the meaning of diffusion? Suppose अभी for example हर घर में परफ्यूम कोई ना कोई यूज़ करता होगा, ठीक है। सो एक जगह पे परफ्यूम यूज़ किया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ रूम, 2D स्ट्रक्चर आई एम ड्राइंग। अगर किसी ने इस रीजन में परफ्यूम छिड़का तो क्या वो इधर ही रहेगा क्या? नो, इट विल ट्राई एंड स्प्रेड ओवर, इट विल स्प्रेड एवरीवेयर। मीन्स वॉट? इट इज़ गेटिंग मिक्सड विद द गैस। गैस मीन्स एयर व्हाटसोएवर इज प्रेजेंट इन द रूम, ठीक है। उस प्रोसेस को बेटा बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। तो सॉलिड्स ईजीली डिफ्यूज होंगे क्या? नो। अगर वो बहुत रिजिड है, अगर वो बहुत हाईली कॉम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा लो कॉम्प्रेसिबिलिटी है, वो दूसरों के साथ मिक्स क्यों होंगे? इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल फॉर अ सॉलिड टू गेट डिफ्यूज, और इवन इफ इट इज़ गेटिंग डिफ्यूज इट इज़ वेरी स्लो डिफ्यूजन। ओके, सो द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल और रादर वेरी स्लो। एंड वाई इट इज़ सो? बिकॉज परमानेंट पोजिशन है बेटा particles का, may it be molecule, may it be ion, and therefore they will not get diffused to anybody, may it be solid, liquid or gas. Okay, vapor pressure. So what is the meaning of vapor pressure? Those people who don't know, please understand this. Suppose I have a container like this, okay, and this side is not visible, and suppose there is a liquid in this. Okay, so now when a burner is installed, heat energy is supplied to this liquid. Yes, so of course liquid will try to change into gas, that is vapor. Okay, and it will try to rise up, vapors will try to come up, ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे वो क्या करेंगे, इस इधर मैं एक ढक्कन लगा देता हूँ, ठीक है। सपोज देर इज अ बिग लिड ओवर हियर एंड द वेपर्स व्हाट विल दे डू? दे विल एक्सर्ट सम फोर्स ऑन दिस लिड, दैट इज ढक्कन के ऊपर कोई ना कोई वो फोर्स एक्सर्ट करेंगे। सो फोर्स एक्सर्ट करेंगे किस पे? ढक्कन पे। ढक्कन के किस पे? ढक्कन के एरिया पे। सो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, सो फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये किसका प्रेशर है? वेपर का प्रेशर है, इसलिए इसका नाम होता है वेपर प्रेशर।
Okay, so the vapor pressure of solid is generally much less. Okay, अब ये वेपर्स जनरेट कैसे हुए? बिकॉज वी सप्लाइड सम काइंड ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी सॉलिड्स में बहुत कम है, वी हैव ऑलरेडी सीन दिस. देयरफॉर द वेपर प्रेशर विल बी वेरी वेरी लेस as compared to liquids and gases. Gases का vapor pressure is very very high. We will be seeing that later on. Okay. Next is, so some particles near the surface may have high kinetic energy and they will move into the vapor state. Okay, as I have told. So this was, suppose the I'm drawing now the 2D structure. यहाँ पर जो molecules या atoms है उस liquid के या solid के, उनको थोड़ा एनर्जी ज़्यादा मिले, थोड़ा ही एनर्जी लगता है इस सरफेस को ओवरकम करके बाहर निकलने में, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को ओवरकम करके बाहर निकलने में. सो वेपर प्रेशर लिक्विड्स का ज़्यादा रहेगा. सॉलिड का दे ऑल आर बाउंडेड. ओके, दे ऑल आर वेरी क्लोजली पैक, तो बहुत इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवन इफ यू सप्लाई एनर्जी, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी, दे विल नॉट go out. Vapor pressure is very very low. ठीक है. Now melting point. So what is melting? That is melting point. The temperature at which solids and liquids form a substance. Okay, means what? The solid liquid forms of a substance. Suppose there is our temperature. It is called as triple point of water or triple point of anything. So at that temperature what happens? For example 100 degree Celsius. 100 डिग्री सेल्सियस पे होता क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा वाटर भी नहीं होता है, पूरा का पूरा गैस भी नहीं होता है, दैट इज वेपर्स भी नहीं होता है. ठीक है. सो दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर वेयर द लिक्विड्स एंड द गैसेस आर को एग्जिस्टिंग इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट. सिमिलरली वी विल बी चेकिंग मेल्टिंग पॉइंट. मेल्टिंग मतलब क्या? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना. फॉर एग्जाम्पल आइस का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. ओके, सो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको पता होगा लेटेंट हीट कॉन्सेप्ट एंड ऑल. ठीक है. सो अगर नहीं पता है वी विल बी टेकिंग दैट लेटर ऑन. सो एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट हैपन्स? भल पूरा का पूरा सॉलिड आइस भी नहीं है एंड पूरा का पूरा वाटर भी नहीं है. जब तक दिस 0 डिग्री सेल्सियस आइस अपॉन हीटिंग को ट्रायंगल से दिखाते हैं, गेट्स कन्वर्टेड इनटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, तब तक ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा. एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज मेल्टिंग पॉइंट. ओके, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स ऑफ अ सब्सटेंस एग्जिस्ट और को एग्जिस्ट एट इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम मतलब क्या? दिस आइस टू वाटर रिएक्शन और फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू वाटर टू आइस फॉर्मेशन. कुछ भी हो सकता है. दिस इज इरिवर्सिबल, दिस इज रिवर्सिबल. ओके, then it is called as equilibrium. Okay, so both will have same vapor pressure at this stage, both will have same vapor pressure. Okay, so now talking about melting points of solids. So on supplying heat energy, the particles acquire sufficient energy and move towards the fixed position in the space. Okay, so again that example of container containing some liquid and I'm going to heat it, but now this time I'm not going to put any water in it because we are now studying solids. हम solids का study कर रहे हैं. Now I'm going to heat it. So of course आपको पता ही होगा ये compact arrangement होता है. ठीक है. So what will happen? जब तक ये layer प्लस ये लेयर प्लस ये लेयर प्लस ये लेयर, सारी लेयर्स जब तक मेल्ट नहीं होगी तब तक तो ये प्रोसेस चलता रहेगा. ओके, सो ये जो प्रोसेस चलता रहेगा इट इज़ एट कांस्टेंट टेम्परेचर. फॉर सपोज इफ इट दिस वाज आइस, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग चालू, आई मीन हीटिंग चालू किया, एंड एट 0 डिग्री सेल्सियस जब तक ये पूरी लेयर्स मेल्ट नहीं होती तब तक ये 0 ही रहेगा. दैट इज इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. दैट इज it is going to have a fixed or sharp melting point. It is going to have sharp melting point, that is definite melting point. And ऐसा क्यों? क्योंकि solid is consisting of layers. Okay, we will be seeing that later on. Layer by layer it will start melting and after that only the temperature will change. Okay, so now
In solids, that is amorphous solids, some melting point is not sharp, that we will be seeing later on. Now some important points. The correlation between structure, अब ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग solid state, the correlation between structure and properties, structure and properties helps us to discover new solid materials with desired properties. इसका मतलब क्या है कि for example I want to become an astronaut, or I want to start my own space agency and I want to design a rocket. Okay, I want to design a rocket. So for a rocket मेरे को पता होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसको कितना स्पीड चाहिए, वो कहाँ कहाँ जाने वाला है, उसके ऊपर डिपेंडिंग अपॉन दैट आई विल डिज़ाइन दिस रॉकेट. ओके, आई विल डिज़ाइन द मटेरियल ऑफ द रॉकेट. अब मटेरियल मतलब उसका स्ट्रक्चर भी मालूम चाहिए कि मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है. ओके, क्यों, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम करनी चाहिए. ठीक है, उससे इन दोनों से क्या होगा, दैट देन वी विल बी एबल टू design a proper material, select a proper material. और अगेन आई सेड डिज़ाइन मीन्स व्हाट, अगर हमको अलॉय चाहिए तो हम अलॉय भी ले सकते हैं, एंड thereby giving efficiency, good amount of efficiency. Okay, so next point is we will also learn properties get modified due to structural imperfections. This also we will be learning later on. For now we will skip it. Types of solids. So on the basis of nature of order present, I told you that there is an order in a solid. So इस order के ऊपर, इस order पे dependent जो solids होते हैं वो two types के होते हैं. One is called as amorphous and one is called as crystalline. So as you can see there in amorphous you cannot see any order, कोई regular order नहीं है. कुछ green है तो उसके बाद कितने भी blues आ रहे हैं, blue molecules आ रहे हैं या blue particles आ रहे हैं. ओके, ब्लू के बाद कितने भी ग्रीन्स आ रहे हैं, बट इधर ऐसा नहीं है. इधर यू कैन सी वन येलो वन रेड, आफ्टर रेड येलो, आफ्टर येलो रेड. सो येलो रेड, देयर यू कैन सी अ वेरी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. अमॉर्फस में कोई सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नहीं है. सो जाहिर सी बात है, इफ देर इज नो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस. ओके, दे आर नॉट गोइंग टू बी अरेंज्ड as compared to crystalline solids. Okay, so now we will be getting into the details of crystalline solids and amorphous solids. So when a physical property is measured along a slanting line, suppose we have to measure a physical property. Okay, so हमने पहले तो crystalline solids और amorphous solids को ठीक से देखना है. For that purpose I will first explain what is crystalline solid and what is amorphous solid. Okay, so let us zoom in. Let us first understand what is amorphous solid. ठीक है, तो look here in the diagram. First of all, here you can see one of the molecule that is shown in red. Again you can see one of the molecule showed in blue. आपको यहाँ पर कोई भी regular arrangement नहीं दिख रही है. इसका मतलब क्या है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और भी बहुत सारी चीज़ें होगी, बट दे आर नॉट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट और प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ सॉलिड. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज सीडो सॉलिड और सूडो सॉलिड, फेक सॉलिड्स. ठीक है, सो इन अमॉर्फस सॉलिड्स द अरेंजमेंट ऑफ बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स. बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब क्या, कुछ भी हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल्स, ओके, और इवन आयंस. So in amorphous solids the arrangement of building constituent is not regular. Okay, यहाँ पर आपको कोई भी regular arrangement नहीं दिख रही है. So इसलिए इसको कोई shape नहीं होगा. That means they are shapeless. Okay, all one more property is there, isotropic. ये isotropic क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे. Firstly let me complete this. So although these solids possess some of the mechanical properties such as rigidity, compressibility, refractive index, but इसमें कोई भी प्रॉपर शेप इसका प्रॉपर नहीं है, इसमें कोई भी ज्योमेट्री नहीं डिसाइड कर सकता. ठीक है, दिस इज अमॉर्फस सॉलिड. नाउ अगर शेप या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ही नज़दीक में नहीं है तो इसमें कोई ऑर्डर होगी क्या, नहीं होगी. ओके, सो they have no order or very short order, short range order. ठीक है,
Next is they do not undergo clean cleavage. What is the meaning of clean cleavage? This also I will explain in a matter of time. Okay, two concepts, that is isotropic and clean cleavage. Next is they are regarded as supercooled liquids. जब लिक्विड को बहुत 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 ज़्यादा कूल किया, it is not a proper solid, but the intermediate state is called as supercooled liquid. बहुत ज़्यादा कूल किया and that is regarded as, that is analogous or similar to amorphous solids. Okay, यहाँ पर cohesive forces कैसे रहेंगे? बहुत ज़्यादा कम. ठीक है, it will be very very less. Now next point is examples. Glass, rubber, plastic are the examples of amorphous solids. So this is an example of glass, as you can see. Okay, and they do not have sharp melting points. अब यहाँ पे layers ही नहीं हैं, layer by layer they will not melt, right? And if the layer by layer melting is not taking place, then you can say there is no sharp melting point. यहाँ पे sharp melting point नहीं रहेगा. पहले तो ये लोग मेल्ट हो जाएंगे फॉर सपोज इस एरिया के, देन लेटर ऑन दीज विल कम, फिर ये लोग मेल्ट होंगे, फिर ये, एंड मे बी आफ्टरवर्ड्स these few remaining people or few particles. Okay, so there is no sharp melting point. Now example, when glass is heated it softens. आपको पता होगा that when we heat a glass it gets soft. Okay, and you cannot see sudden change in temperature नहीं होता है. पहले तो वो मेल्ट होगा, उसके बाद वो लिक्विड के जैसा सेमी फ्लूइड बोल सकते हैं या सेमी लिक्विड बोल सकते हैं. ओके, so that process happens and after that it starts flowing. ठीक है, so this is an example of amorphous solid. Okay, so now let us come back. Amorphous solid is not there in great detail in our syllabus, but here I told you that two concepts are remaining, that is isotropic and clean cleavage. Okay, this I'll explain. Let us first understand what is isotropic and anisotropic. Fine, then clean cleavage हम लोग crystalline solids में देखेंगे. So when a physical property is measured along a slanting line CD, so slanting line CD कहाँ है? So this is A first of all, here you have B. Okay, so this is one line and also consider the other line. This is point C, the A and C are starting at same points and this is the point D. ठीक है, अब ध्यान से सुनो. If I examine the properties from A to B, this direction, in this direction, the properties will be different to that when I measure it in this direction. क्यों? क्योंकि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही अलग हैं. ओके, हियर पार्टिकल फॉर सपोज येलो इज प्रेजेंट, हियर पार्टिकल रेड इज प्रेजेंट, येलो रेड. ठीक है, यहाँ पर केवल येलो. ओके, केवल येलो. एंड इफ वी टॉक अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स, यहाँ पे तो सब लोग रैंडमली घूम रहे हैं, मतलब हर जगह पे प्रॉपर्टी सेम. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमारे कॉमन एग्जाम्पल में हम लोग ये देखते हैं, हम लोग स्कूल में जब जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज असेंबली टाइम. ओके, सो ऑल आर स्टैंडिंग इन अ प्रॉपर लाइन्स. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज बॉयज लाइन, दिस इज गर्ल्स लाइन, दिस इज बॉयज लाइन, दिस इज गर्ल्स लाइन. बट नाउ द स्कूल हैज़ एंडेड, स्कूल खत्म हो गई, तो सब लोग रैंडमली घूमेंगे. आप जहाँ देखोगे बॉयज़ गर्ल्स भी दिखेंगे, यहाँ देखोगे बॉयज़ और गर्ल्स दोनों दिखेंगे, कोई भी डायरेक्शन में देखोगे तो बॉयज़ एंड गर्ल्स दिखेंगे. राइट, इधर ऐसा नहीं है, इधर ऐसा ऑर्डर्ड में है. सो व्हेन वी हैव एन ऑर्डर अरेंजमेंट, ओके, व्हेन वी हैव एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट लाइक दिस, ओके, लाइक दिस, एंड random arrangement like this, this ordered arrangement we have when we measure the properties, they are coming out to be same or different, they will be different. So that is called as anisotropy. anisotropy. ठीक है, बट यहाँ पर इस वाले डायग्राम में हम लोग अगर देखें तो आफ्टर द स्कूल हर जगह पे बॉयज़ एंड गर्ल्स का कॉम्बिनेशन दिख रहा है. सो द प्रॉपर्टीज आर सेम एवरीवेयर, दैट इज इट इज कॉल्ड एज आइसोट्रॉपिक. ओके, सो एनिसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक. लेट अस टेक सम few distinguish between points. So first is crystalline
solids are anisotropic, हम लोग अभी crystalline पढ़ेंगे. And what is the exact meaning? For example, if I take this example is of what? This example is of graphite. Okay, so for example, if what is written over here, if the properties such as refractive index, thermal expansion का coefficient, या फिर conduction of electricity, heat, कुछ भी ले, ये अलग रहेगा. ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है क्या? नहीं, यहाँ पर तो सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो रैंडम अरेंजमेंट है. ठीक है, अब रैंडम अरेंजमेंट मतलब क्या? हर पार्टिकल वहाँ पर है, हर किस्म का पार्टिकल वहाँ पर है. तो इसलिए अमॉर्फस सॉलिड्स विच वर हैविंग नो पर्टिकुलर अरेंजमेंट, हमने देखा था, दे आर कॉल्ड एज दे आर कमिंग अंडर आइसोट्रॉपी. ठीक है, सो द प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शंस आर डिफरेंट. अब यहाँ पर डिफरेंट कैसा है, दैट वी विल टेक विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल. सो जो पिछले स्लाइड में देखा था, दैट वॉज द टॉप व्यू ऑफ ग्राफाइट. दिस इज द साइड व्यू. For example, I have just drawn the side view. I have just taken the side view for example, for letting you know. So use yellow color. So these are carbon atoms. I hope you know graphite is having a structure like this. This is layer number 1. Okay, where should I write it over here? This is layer 1. This is layer 2 and this is layer 3. Okay, layer 1, layer 2, layer 3, all are same, सब सेम है, बस लेयर में फ़र्क दिखाने के लिए रेड, ग्रीन एंड ब्लू दिखा है. सो दीज आर कार्बन एटम्स. ऑफ कोर्स यू नो दैट कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवैलेंट बॉन्ड. ओके, कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट. दैट कोवैलेंट बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, so carbon में equal sharing होता है, that is why they are having covalent bond. Now there is one more type of force that you can see in this form, in the form of these black lines. ये black lines क्या है? These are called as van der Waals bond या van der Waals forces of attraction. अब वो dotted क्यों है? Because it is not very strong. ये जो strong है वो पूरा solid line बताया गया है, but ये तो बहुत ही weak force है. ठीक है, बट है तो सही. ठीक है, नाउ लेट अस टेक द बॉन्ड लेंथ. बॉन्ड लेंथ कितनी है? द वैन डर वाल्स बॉन्ड इज हैविंग 0.34 नैनोमीटर्स एज द बॉन्ड लेंथ. और व्हाट अबाउट कोवैलेंट बॉन्ड? उसकी बॉन्ड लेंथ हियर इन द फार लेफ्ट टॉप कॉर्नर यू कैन सी 0.14 nanometers. Okay, now please look here, very interesting and very important. So what I do now is I supply heat in this direction. In this direction I'm supplying heat. What will happen? This atom will vibrate. This will supply energy to this atom, this atom, this atom, and this goes on. Okay, this is going on, same properties everywhere. But now if I supply heat in this direction, that is from above to below, इस डायरेक्शन में मैं अगर हीट को सप्लाई करूँगा तो एज यू कैन सी देर आर डिफरेंट लेयर्स. सो हीट विल नॉट बी इक्वल इफ आई चेक इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन एंड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेयर चेंज हो रहा है, द डिस्टेंस इज मोर. सो हीट, इफ आई सप्लाई सेम अमाउंट ऑफ हीट ओवर हियर Q and heat over here Q, the heat energy which will be experienced by the furthermost atom in this layer will be more as compared to the heat energy experienced by the bottommost layer when we supply heat in the vertical direction. So there is a difference of properties. Okay, so this is the property called as what? Called as anisotropy. Okay, so let us come back now to the previous part. Now we will study crystalline solids. Okay, so here you can see a very beautiful arrangement is seen. This is one type of atom and this is another type of atom that is present in a solid. Okay, so you can see that there is a definite arrangement, means layers are present. So the substance whose constituents are arranged in
definite orderly arrangement, they are called as crystalline solids. Okay, so the building constituent of the crystalline solids are in regular pattern. Okay, and they have a three-dimensional structure. We saw already such kind of structure. This is the top view, we saw the side view. Okay, now as you can see here, if I supply some kind of energy, ये तो बराबर से यहाँ चला जाएगा, but if I supply it in this direction, that will be having different magnitude, right? So they are anisotropic. Crystalline solids are anisotropic. Now there is a huge length, bond length बहुत ज़्यादा है, ठीक है, भले ही atom के बीच में the bond length is less, but you can see a long chain, of atoms. May they be similar or dissimilar. So crystalline solids have long range order, right? Now crystalline solids are having crystals. What is a crystal? That brings, हम लोग अभी next part में पढ़ेंगे unit cell. Okay, so a crystalline solid consists of large number of units called as crystal. Now what is unit cell we will learn later on, but now we are interested in the crystal. A crystal is defined as a solid figure which has definite geometrical shape. Okay, अब जैसे amorphous में था that was shapeless, यहाँ पर एक definite shape है. So this is forming a hexagon in this example. Okay, this is forming an hexagon and it has sharp edges. Okay, fine. So this is called as crystal. Fine. Now crystals have sharp melting point. क्यों? क्योंकि जब तक ये पूरा क्रिस्टल और ये पूरा इन टोटल ये पूरा क्रिस्टल मेल्ट नहीं होता तब तक मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा क्या, तब तक टेम्परेचर चेंज होगा क्या, नहीं. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द प्रीवियस स्लाइड. सो इट एब्रप्टली चेंजेस. मतलब क्या? व्हेन आई सप्लाई दी एनर्जी दे ऑल विल चेंज इनटू लिक्विड साइमल्टेनियसली. Okay, so they have sharp melting point. Now physical properties such as conductivity, maybe thermal, maybe electrical, refractive index are different in different directions. So that is they are anisotropic. We have already seen this. Now one last concept in this part, that is clean cleavage. ये रह गया था बताना. Okay, so let us take a look at what is clean cleavage. So again the same example of graphite I have taken. This is the first layer, and for example this is the second layer, and this is the third layer. Okay, you all know that these are covalent bonds present between carbon atoms, right? And this is the weak van der Waals bond or van der Waals forces which are attracting or maybe repelling each other. Okay, and here this black color plane is called as the cutting plane. Cleavage means breaking or cutting. Cleavage means breakdown or cutting. This is the cutting plane. अब अगर मैं इसको कट करता हूँ, this plane travels in this direction. Okay, so layer 1 बहुत अच्छे से कट हो जाएगी, right? Layer 2, if I cut this in this direction, ये layer 2 will be having sharp edges. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये layer में है. वहीं पे if I had amorphous solids, for example this is one kind of atom present in amorphous solid, and maybe I'll use another kind of atom, so it is shown by blue color. अब इसको कट करोगे, for example in this particular plane, you will not be able to get a sharp edge or a sharp face, a clean face. Okay, that is called as it is not cut down very neatly or cleanly. ठीक है, here you can see a clean cleavage, here you cannot see a clean cleavage. So in amorphous solids there is no clean cleavage, you cannot cut them, and here you can cut them and you will get separate layers. Alright, so that was it for crystalline solids. These are the properties. Lastly, the solids that we are going to study from now onwards are going to be crystalline solids.